Hello, everybody. Hi. I am extremely glad and very happy to catch up with you all after such a long span of time. I hope you all are doing fantastic. सब कुछ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आई एम श्योर कि ये नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाएगा बिकॉज आई बीन एक्टिव ऑन माई चैनल आफ्टर a very long period of time, but nevertheless I decided to catch up with everything that I missed in last few months. So yeah, things have been nice, things have been tough. I thought कि before I start with the एक प्रोफेशनल ये पूरा फिर से वीडियोस वीडियोस का सेटअप मैं अपनी ऑडियंस के साथ दोबारा कैचअप कर लूँ, क्या हाल चाल है, कैसे है सब कुछ वो देख लूँ. Yeah, so here I am, of course. Yes, I know Rohit. Hi, how are you doing there? I remember you with your photo, Rohit. So good. So glad. Artist B. Hi, ma'am. Hi, artist. How are you doing? Rohit is saying after 4 months. Oh my goodness. Rohit, do not remind me of that. I mean, that's such an embarrassment. I have such cute and lovely bunch of people, जो कि uh, who always keep a tab of my whereabouts. So I'm like extremely embarrassed कि मैं 4 महीने एकदम गायब थी, but अब मैं वो काम नहीं करूंगी, अब मैं गायब नहीं रहूंगी. अब हम लोग मिलेंगे और हम लोग आपस में बातचीत करेंगे. मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी. दो मैं अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर लाइव आ जाती हूँ. लाइक फॉर लास्ट 2 वीक्स आई एम ट्राइंग माई सिंसेयर एफर्ट्स कि मैं वहां पर लाइव जा करके आप सभी लोगों से मिलूं. सो यही कोशिश मेरी यहाँ भी रहेगी. ऑल्सो गाइज, आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हो द वीडियोस दैट यू वांट ऑन माय चैनल नाउ, and I promise that I'm gonna work on those suggestions and I'll try to make videos based on all of your requests. So you have time, type it down कि आपको कौन कौन सी videos हैं जो आप expect करते हैं that I should make it on my channel. Okay. Meanwhile, I have Sani who's saying, "Ma'am, I was waiting for your video since morning." Oh, that's so nice of you. That's so nice of you. Thank you so much. और उसमें भी एक गड़बड़ हो गई थी. पहले मेरा लाइव जो था 5:45 का था, बट थोड़ा सा क्या कहते हैं गड़बड़ होने के कारण जो है टेक्निकल ग्लिच के कारण टू बी क्योंकि मैंने इतने टाइम लाइव नहीं किया ना, तो इस वजह से थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो रहा था. उसकी वजह से मेरे को दोबारा रीस्केड्यूल करके 6 बजे करना पड़ा. सो यस, दैट इज समथिंग दैट हैपेंड. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. हाँ, Swapnil. Hi, Swapnil. How are you doing? अच्छा, नीरज देवली is asking NTA net psychology के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं. What exactly in NTA net psychology do you wish to know? Do let me know. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इसका सिलेबस तो इतना बड़ा होता है जो कवर करना टेक्निकली नॉट पॉसिबल फॉर मी ओवर हियर. दैट्स अ ट्रू फैक्ट. तो वो नहीं हो पाएगा. But if there's any specific portion, if there's any specific tips that you require and you want, then I certainly can work on that. So मुझे बताओ नीरज कि तुम क्या exactly चाहते हो जो मैं करूँ. Sani is saying, ma'am, I am studying my in first year MA clinical psychology. I am finding statistics very difficult to understand. What tips would you give me as a beginner? So Sani, बहुत ही एक छोटी सी चीज होती है जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं ना इन आवर कोर्स. स्टैट्स इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिटेल्ड. ओके, उसके कुछ ही चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं. सो आई एम गोना से कि आपको प्रैक्टिस करनी है as many times as possible. That is something that is going to help you for your clinical for your stats, because इतना डिस्क्रिप्टिव इतना डिटेल्ड तो नहीं होता है, बट जो होता है उसको करना पड़ता है. मोर ओवर, डू नॉट टारगेट कि आप इंटायर सिलेबस कवर कर लोगे, बिकॉज सर्टनली दैट्स योर वीक पॉइंट इन द whole lot of subjects that you have in clinical. So what I'm going to suggest कि उन पोर्शंस के ऊपर टारगेट करो या फोकस करो जो रिपीटेडली लास्ट फ्यू ईयर्स से एग्जाम में आ रहे हैं या जिनका आना मैंडेटरी है. ओके, एंड उसके ऊपर अपनी पकड़ अच्छे से जमा लो. सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, just just try to focus on certain portions, certain things
that you can master. Okay, this is going to be my suggestion to handle your statistics, because certainly जिनके लिए मुश्किल होता है कोई एक सब्जेक्ट, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें भी जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, है ना? तो इसीलिए उसको बड़ा ना करते हुए सिर्फ उतना ही पोर्शन करो जो एग्जाम में फॉर श्योर आ रहा है। लास्ट 10 years के पेपर्स को चेक करो, स्टैट्स के, देखो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं, और उसी तरह के सवालों के ऊपर अपना फोकस, अपना ध्यान लेकर के जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग, इफ यू डू इट, इफ यू फॉलो इट रिलीजियसली, it is going to benefit you. Okay, Sunny, I hope that well. I mean, I hope that works. Yeah. और कोई वीडियो जो आप चाहते हैं मैं बनाऊं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, आज आप सब लोग यहाँ पर हो, you're responding, you're talking to me, this is, to be honest, it is overwhelming. I mean, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं 4 महीने बाद लाइव आऊंगी और मेरी ऑडियंस मेरे से इतना बात करेगी, एंड दे विल आल्सो कंप्लेन दैट वेयर हैव यू बीन फॉर लास्ट 4 months. So that's fab, yaar. I'm very happy, very happy. Okay, I have midnight therapy. I like your DP word, by the way. That's really nice. I'm doing my bachelor's in psychology from Aligarh Muslim University, and I'm planning to get my further psych degree from Germany. Will this step be really helpful for my future? So certainly ये टिप मैं अक्सर कई लोगों को देती हूँ जो कि इंडिया के बाहर जाके अपनी हायर क्वालिफिकेशन करने का सोचते हैं. This is certainly a great idea to go out and do your masters and everything. But also the amount of money. This is like my standard statement. ठीक है. अब क्या होता है ना कि see, when you'll go to Germany, you'll invest about like 20-25 lakhs, complete your degree over there, and eventually you'll get a job also and everything. Internship भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. Once you come back in India, so the amount that you've invested, it's very hard to recover. Okay, especially in India. So my suggestion to those people who are going abroad after their basic qualifications in India is to actually look out for job opportunities outside. Then it's extremely beneficial. It's extremely cost effective also, and you're gonna make money as well. See, it is a very novel profession. There's no denial about it. But at the same point of time, we also cannot disagree with the fact that we have to earn our bread and butter, right? And if there's any good and better option or opportunity that you get to see and get to observe, मैं बिल्कुल honest suggestions आप लोगों को देती हूँ. मैं बिल्कुल भी इस चीज को encourage नहीं करती हूँ. Let's say, there are a lot of time when children approaches me with the fact कि मैम हम नेट करें, सॉरी मैम हम नीट की तैयारी करें या हम साइकोलॉजी में डिग्री ले. तो आई ऑलवेज आई एम वेरी वेरी अपफ्रंट एंड वेरी वेरी you know honest with such children that if you're a bright child and if you have the potential to go for NEET and do MBBS and MD and all of it, then मैं हमेशा उन्हें यही सजेस्ट करती हूँ कि आप वही करें. क्योंकि यार अल्टीमेटली in long run आपको you need to make money in your life. Everyone I believe wants a very happy, nice and prosperity in their life. अगर आपको वही नहीं मिलती है तो इवेंचुअली आपकी जिंदगी में थोड़ी सी उदासीनता आ जाती है, राइट? सो helping is certainly important, but at the same point of time your own happiness is also equally at par, right? So yeah, midnight therapy, that's the thing for you. Being UP Fusion, Ruchi Das is asking, मैम मैं साइकोलॉजी से एमए करना चाहती हूँ बट मेरा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कमजोर है, तो क्या हिंदी से कर सकते हैं? क्या एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए इंग्लिश जरूरी है? प्लीज बताएं. देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर रुचि. एक, जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आता है. यूनिवर्सिटी में कौन सी भाषा में उसको पढ़ाया जा रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है? So most of the universities के अंदर mode of communication usually is in English. तो वहाँ पे you can't really do anything. But जब आप लिखने बैठते हैं तो वहाँ पे मोड जो है दोनों तरह से, I mean दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर आता है, and you have the choice to attempt your answer in Hindi as well.
ठीक है, ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बात की जाती है कि दूसरे सवाल के जवाब पे। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे इंडिया के अंदर 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो इंग्लिश नहीं जानती है, जो सिर्फ हिंदी जानती है। ठीक है, उनको हिंदी ही समझ आती है। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको हिंदी, आपको इंग्लिश ही जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जरूरी है या मैंडेटरी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, the cities or the people who will be willing to pay you for your profession will be the people who are communicating in English. ठीक है, बिकॉज जो लोग थोड़े से निचले तबके में रहते हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम सरकारी जॉब्स जो होती है या सरकारी नौकरियां जो हैं या अपॉर्चुनिटीज जो निकलती हैं, या इफ दे आर रनिंग अ कैंपेन इन सम पर्टिकुलर विलेज या कहीं पर कर रहे हैं, तो वहां पे दे वांट यू टू नो अ लोकल लैंग्वेज आल्सो। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या हिंदी ही जानना जरूरी है या इंग्लिश ही जानना जरूरी है। बट आई वुड नॉट से कि आप कंप्लीटली इंग्लिश से दूर रहें और सिर्फ हिंदी जाने तब आपका काम चल जाएगा। बट ये सब वेरी करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। सो दिस इज ऑल वेरी डिबेटेबल, वेरी वेरी यू नो वाइड। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं हो सकता है रुचि। इसके अलावा कोई और सवाल तो मुझसे पूछना चाहती हो तो जरूर पूछो। Sunny is saying, ma'am, where and what to do? What do you currently practice? Just want to know. Okay, so Sani, I am located in Mumbai. Okay, I am at the moment on my sabbatical because I have delivered a baby last year, and because of that, I am taking a break from my profession. But I do freelance counseling online specifically. I am not taking any offline counseling sessions at the moment, but I do take up online counseling session. I do have various clients, who are associated with me. I do take up tuitions for psychology for undergraduates as well as for 11th and 12th CBSE, ISC, and A levels. So this is what I usually do. Okay, I hope that helps. And if there's anybody who's looking out for therapy or who's looking out for some guidance in psychology, I'm up for it. So you can spread the word and let the world know that I'm there. Midnight therapy, sure, ma'am. I look forward to it. As also, I'm really very passionate about this field. Thanks a lot. Most welcome and all the very best to you. I hope you do fab in your life, and you will, because passion is something which is required and important for everything that we do in our life. And if you do have that passion, I'm sure it's going to take you really, really, really far away. So yes, this is what um, सौम्या का सवाल आया है। कह रही हैं पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग बेनिफिट्स। It's extremely important if you're somebody who's trying to be a counselor or a therapist in a professional setting. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, तो फ्रीलांसर को ये करने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होती किसी स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो मुझे पीजी डिप्लोमा गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती। ठीक है, देन आई रिक्वायर दिस because as a CBSE norm, it is a mandatory qualification that you require as a counseling psychologist or as a therapist or as a counselor. Okay, so yes, it is an extremely important degree if you in case are looking out for a job as a counseling psychologist, counselor, school psychologist, etc, etc. Okay, all right. Mansi, ma'am, I am in 11th arts. I decided to make a career in psychology, so which is better theo theorist or counselor? What is theorist? Please clarify your question first. Not quite clear with that. Ma'am, do you take personal tuitions for postgraduate levels as well? See, I'll be very honest. Though I don't take up tuitions for postgraduate level, but let me tell you this one clear thing, that the syllabus for the the content, since I am PhD in psychology, so I have gone through all of those levels. So I know कि जो
content hota hai na, that remains the same. It's how you present your answer, it's how you're understanding about it, and it's how well do you understand everything that changes. The depth of the subject that changes. Because see, Freud you've studied in 11th and 12th, Freud you've studied in graduation, Freud you must be studying in your post graduation, Freud if in case you take up something associated with your Freud in your research as well, then also you'll do the same thing. So the concept never changes. It remains the same across, different therapy. Even if you go to Germany, it will remain the same. It'll never change. Okay? Nobody will teach you ego, super ego as differently. It's gonna be the same. वो हमेशा एक ही रहेगा. Yeah, so in case you're looking out for some kind of a guidance for your post-graduation level, to be honest, I'm not taught anybody at a postgraduate level, but I'm quite sure I'll be able to do it if in case, I get to see the syllabus. So that's not a problem, Sani. So just have a look at that. I will work my language. Chalo. ठीक है रुचि, you must work, you must see. Guys, you can also follow me on my Instagram handle, which is @unlock psychology. Or in case you want to get in touch with me regarding any personal tuitions, regarding any therapy sessions, आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं, and I'll be more than happy to respond to you over there. So yeah, you can do that. एंटरटेनमेंट, पीजी डिप्लोमा में एनरोल होते हुए पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं. सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि 2 डिग्री एक ही साल में ऑब्टेन नहीं की जा सकती. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. You can enroll yourself in 2 degrees. Don't enroll yourself at the same year, okay? And do not exit also at the same year. This is something that you need to keep in mind. That's it. Apart from that, you can. Also, आपकी PhD degree जो है full time नहीं होनी चाहिए, part time होनी चाहिए. I mean, there are certain do's and don'ts. Apart from that, you can. हो सकता है, उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है. जैसे मैंने अपनी बीएड की डिग्री ली थी while I was also doing my PhD. So yeah, that's something that you need to do. I think rest is fine. ऐसा कुछ इतना complicated नहीं होता. I still show my B.Ed and I still show my PhD. So both my degrees are quite valid. ठीक है? Any other question? कोई और सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जल्दी से पूछिए. Or in case you want me to make any specific video on your choice of topic, वो भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करूं. दैट्स गोना बी माय utmost effort. ओके. रोहित सोच रहा है कि मीट एंड ग्रीट की लोकेशन एंड टाइमिंग शेयर करोगे मैम आप. ओ, ये वर्चुअल मीट एंड ग्रीट था रोहित. पर्सनल मीट एंड ग्रीट थोड़ा हो नहीं रहा है. सब कुछ वर्चुअली चले जा रहा है पोस्ट कोविड. सो फॉर मी इट्स द वर्चुअल वर्ल्ड इज स्टिल ऑन. So let's see at when and by when this virtual world catch up will get over. So yeah, that's the thing. PhD interview question बताइएगा. Of course, I think I'm gonna make a video on this entertainment world. That's quite an interesting topic that you asked. PhD interview questions. So I'll make a video on this. This is a very interesting topic I find, and I think more and more people need to know about it. Rather than just sharing with the small audience, I would like to share it with maximum number of people. So yes, one topic on which the video definitely is going to be there on air. ठीक है? कोई और टॉपिक, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू डिस्कस, मुझे जरूर बताओ. अदरवाइज आज के लिए मुझे लगता है कि वार्म अप सेशन आज का काफी हो गया है, और जल्दी ही हम जो है फटाफट से और भी वीडियोस के साथ और भी लाइव सेशंस के साथ आपके साथ मिलेंगे. एंड या that's the thing that I would like to tell you all. ओके. सो गाइज, आई थिंक मैं आज के लिए आप सभी लोगों से अलविदा कहूंगी और बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मिलूंगी. आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @unlockpsychology. And I am going to be answering all of your questions and everything at every possible place that is. So quickly मैं बता दे रही हूँ, इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल ले जाना जरूरी होता है ले जाना. ठीक है? चलिए,
All the best to you all. Do take care of yourself. I'll see you all super duper soon. Bye bye.